Let's learn how to cook fish curry. Let the oil get heated for some time. I used 800 temperature in induction stove. If you're using gas stove, then just check how much temperature required. If the temperature is less, then the fish may get broken. So be careful about that. आसतु जानिबा केमती माछ तरकारी तैयारी करियो हुए। प्रथमे माछ को भल कर भाजी दियंतु। मु इंडक्शन स्टोव रे 800 तापमात्रा व्यवहार करथिले। आपण तो गैस व्यवहार करछंती तले देखंतु केते तापमात्रा दरकार। तो माछ को भल कर भाजी दियंतु। तापर देखियो हला। नाउ द फिश फ्राई इज रेडी। एटा जब्बर माछ भजा रेछि नै। Now take some sliced onion, ginger and garlic. बर्तमान किसी कटा पियाज रसुण अदा नियंतु. Now put the sliced onion, ginger and garlic in this old style grinder. ये कटा पियाज रसुण अदा को ये छेचा जंत्र रे पकांतु. ये कुटा जंत्र रे पुराना कलिया ग्राइंडर जोटा. Now crush the sliced onion, ginger and garlic properly. Crush means grind it properly. बर्तमान से जो कटा पियाज रसुण अदा को भल कर छेची दियंतु. कसिक कुटी दियंतु है ना. मसलाटा भल कि हो. Now the grinded onion, ginger and garlic is ready. बर्तमान छेचा मसला छेचा पियाज रसुण अदा बढ़िया भाग होगला. Now light fry some sliced potatoes for some time. Means fry some potatoes in less temperature. किसी कटा आलू को अल्प समय धरी अल्प तापमात्रा भाजन. Fry the sliced onion, ginger and garlic in less temperature, same temperature. I used 600 temperature in induction stove for some time. बर्तमान से कटा पियाज रसुण अदा को किसी समय अल्प तापमात्रा भाजन. मु इंडक्शन स्टोव रे 600 तापमात्रा व्यवहार कर. जिते अधिका समय कम तापमात्रा हेबो मसलाटा सेते बढ़िया हो. When the sliced onion, ginger and garlic are properly fried in same temperature or less temperature, then mix the fried potatoes with it properly. जेतेबेले हमर कटा पियाज रसुण आउ अदा भलकरी भाजी गला अल्प तापमात्रा रे टे नाली रंग देखाला. तापर कौन करियो ना भजा आलू आगुन जो आम करते ना ताकि भल कर सहित मिसई देवे आम जो भजा पियाज रसुण अदा. Then pour some water and let the masala and potato get boiled for some time, so that the masala and potato will get mixed and the potato will get boiled. तापर किसी पानी ढाली दियंतु आउ आलू जो मसला को किसी समय सिझा को दियंतु. जहाँद्वारा कौन हम ना आलू सिझीज आ मसला भी सहित भल कि मिसीज. Finally, just mix the fried fish in the gravy and keep it for some time to get boiled, so that the fish will get the taste of the gravy and the gravy will get the taste of the fish. Means fish fry and gravy will be mixed. शेषे कौन करूँ भजा माछ को झोल मिसई दिंतु आ कि समय सिझा को दिंतु. ताद्वारा कौन हम ना पूरा माछ भजाटा हो माछ आ झोल भल कि मिसीज. The fish curry is ready. जानिले तो केमती माछ तरकारी रोषेई करिया हुए. आज्ञा.
Namaskar. Thank you, friends.